Hello, good morning to all students. Welcome to my video class. I am Dr. Avdesh Prasad, Department of Chemistry, Narayan College, Guriyakuti, Siwan. Today I am going to teach you TTC Part 2 Chemistry Honors, Physical Chemistry, and in this section I am going to give a brief idea about Heisenberg's uncertainty principle. हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत. The concept of Bohr's atomic model, as you know from lower classes, consider an electron as a material particle, and so its position and momentum may be determined with accuracy. जैसा कि आप जानते हैं, बोर्स परमाणु सिद्धांत के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है, यानी कण की तरह है, जिससे कि इसका स्थान एवं संवेग एक्यूरेटली यानी कि पूर्ण रूप से शुद्धता निर्धारित किया जा सकता है. बट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव एज सजेस्टेड बाय डी ब्रॉगली, इट इज नॉट पॉसिबल टू ascertain simultaneously the exact position and velocity of the electron more precisely at the given instant, since the wave is extremely extending throughout the region of the space. इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव के जैसा यानी तरंग के स्वभाव से हम अगर तुलना करके देखें, जैसा कि डी ब्रॉगली साहब ने बताया था, तो उसके अनुसार इसका सही स्थान एवं इसका सही वेग पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है. इन ऑर्डर टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन radiation with extremely short wavelength is required. Radiation that has very short wavelength is very energetic in nature. When it strikes the electron, the impact causes a change in velocity of electron. In 1927, Werner Heisenberg presented a principle known as Heisenberg's uncertainty principle, which states that, यानी 1927 ईस्वी में वर्नर हाइजेनबर्ग साहब ने एक सिद्धांत दिया और इसी सिद्धांत का नाम रखा गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत. वास्तव में ये सिद्धांत कहता क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम साइमल्टेनियसली. इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का सही स्थान एवं उसका सही संवेग, ये दोनों एक साथ पता लगाना बिल्कुल ही असंभव है. और इसका मुख्य रूप से जो रीज़न है, कारण है, वो है इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कैरेक्टर. सो मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स इज अनसर्टिनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा पी uncertainty in momentum of electron, and h is Planck's constant. We know that momentum is equal to mass into velocity. So momentum is written as small p is equal to m into c, whereas m is mass and c is velocity. So change in momentum, that delta p is equal to mass into change in velocity, because mass can not be changed but velocity may be changed. So delta p is equal to m into delta c. So delta x into delta m into delta c is greater than equal to h upon 4 pi. Now, in case of bigger particles having considerable mass, the value of uncertainty principle is negligible. It is if the position is known accurately, that is delta x is very small, delta c is very large, and vice versa. Thus, uncertainty principle is valid only in case of smaller moving particles like electrons. Means this principle is applicable for micro particles only, not for macro particles. For other canonical conjugates of motion, the equation of uncertainty principle may be given as momentum is equal to mass into velocity. So mass into velocity may be calculated easily here. Now multiply by time and divided by time, so it become equal to force into time. Momentum into distance is equal to force into distance into time is equal to energy into time. So delta P
into delta x may be written as greater than equal to delta E into delta t. So delta E into delta t is greater than equal to h upon 4 pi. Similarly, delta phi into delta theta is greater than equal to h upon 4 pi. This is applicable for angular motion, and delta E into delta t is greater than equal to h upon 4 pi for energy and time. So it is all about Heisenberg's uncertainty principle. Thanks very much.